से. I क्या got the बात, PPO. सुपर ग्रेट. एंड इनफैक्ट तन्मय के मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा था यहाँ पे. सो आई वेंट टू आई एम बॉम्बे एंड आई मेट तन्मय, विच इज़ रियली अमेजिंग. तो बहुत बहुत मजा. तन्मय तेरी फोटो मैंने अगले साल के बच्चों को बार बार दिखाई थी कि ऐसा हक करूँगा मैं तुम्हें. हाँ, एंड दिस इज द गाय. तो ग्रेट यार, सुपर. चलिए This भाई, was a really good photo, sir. it was a good photo यार, सुपर. हाँ, ये मंडे मोटिवेशन में स्क्रीनशॉट दिखाया था. ये देख, दीप का मैसेज आया. तो तेरा मैसेज मैंने दिखाया था मंडे मोटिवेशन में, और आज यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग कॉल एक्सपेक्ट करने के लिए. सुपर. चलिए भाई, तन्मय, हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? आई एम बॉम्बे, लेट्स गो. Right. So there were two panelists, and I was lucky that I don't know how they forgot about the fact that they should have used BCC other than CC while writing the mail. So I Okay. was able to figure out who are going to be my panelists when they were setting up the meeting link. So I was, cunning enough that I checked their profiles on the internet, and I did some research. उनकी क्या profile है, what sort of background they come from. So one of the professors was from production background, and one was from marketing background. So I was pretty sure that I should expect, both domain questions. So I prepared a little bit about marketing and a little bit about production and manufacturing management. उसके अलावा mostly my interview was based on my profile. So it started off with my introduction, the hygiene questions, Yeah. why MBA. सॉरी टू इंटरप्ट यार. तन्मय, एक बार थोड़ा अपना प्रोफाइल बता दे, और इंक्लूडिंग कैट पर्सनल लेवल, दैट बी ग्रेट हेल्प. हाँ. Sure. So I ended up scoring 98.34 in CAT 2021. My profile is 889, and I have about 1.5 years of experience in the IT sector. I have worked for Infosys for about a year, and then about 6 months in a startup as a tech consultant. Post that, I ended up getting placed in Reliance Industries Limited for my summers, and I have gotten a PPO, and I'll be joining as a Reliance Emerging Leader next year, 2024. सुपर ग्रेट यार. ये लीडरशिप प्रोग्राम बहुत अमेजिंग होते हैं. आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द लीडरशिप प्रोग्राम फ्रॉम जी. सो टैस का भी लीडरशिप प्रोग्राम होता है, जी का भी होता है, फिलिप्स का भी होता है. गिवन अ चांस, ऑलवेज Right. वर्क हार्ड एंड गेट इनटू द लीडरशिप प्रोग्राम. यू आर द ब्लू आइड बॉयज ऑफ द कंपनी. विल डिस्कस दिस लेटर ऑन वंस यू आर एंटरिंग द बी स्कूल. ठीक है, ग्रेट. लेट्स टॉक अबाउट योर Right. इंटरव्यू. या, थैंक्स फॉर दैट. Yeah, so it started off with my introduction. So I gave about 1.5 minutes of my introduction. And then they asked me that you've already, done engineering, you've worked in the IT, so why do you want to do an MBA? And then they It's started 1 asking me a o'clock. few questions. Sorry? ओह, दैट्स माय Oh, वॉच. सॉरी, okay. यहाँ पे 1 बज गया रात का. हाँ, ठीक है, सॉरी. हाँ. Right. So yeah, so post that they started asking me a few questions about mechanical engineering, which was something which I was not expecting because I have work experience of about 1.5 years. Usually professors don't venture into your engineering, graduate degrees if you have, a little bit of experience. But they did venture into it, and they were, trying to catch me in some or the other way. But yeah, so I was prepared in terms of my mechanical engineering as well. Probably they started asking me questions about mechanical engineering because they read in my profile that I have a gold medal in my B.Tech. So probably because of that they ventured into it. So yeah, they started checking my knowledge in mechanical engineering. Few questions, 3 to 4 questions, a few follow-up questions as well. Then they started asking me a few, details about my overall experience at Infosys, what kind of projects I was involved in. So I told them that I was actually working on mainframes. What exactly is the difference between mainframes and cloud? They started, venturing into the details of the project on which I was working on. Then they asked me a question that, you've recently joined a new firm. So like this interview happened in March, and I joined Tech Healers. I left Infosys in the month of November. So like you've recently joined, and now you're ditching the firm again. So why do you think that it's a good option to ditch the firm within 6 months and join an MBA program? So that was another question.
Then okay, so one more thing which happens in IIM Bombay is that they make you fill 3 to 4 questions about 200, 300 words, and those they have those answers which you have written while filling the form, and they will definitely go through those answers and they will pick up stuff from those answers, and they'll ask you questions about it. So I did feel that in my extracurriculars I feel that I was a part of a band so while I was living in my hometown in Jabalpur, and I was a lead vocalist there. So they started asking me that, okay, why are you not pursuing music as a career? Because that's also very lucrative. And they were joking around that we actually need good musicians and good lyricists in Bollywood because of late they've not been making really good music. Because of Tony So Kakkad? yeah, they Okay. So yeah, so they were like, okay, so you write as well. Why don't you try your luck as a lyricist in commercial music and stuff like that. So that was there, and then at the fag end of my interview, they asked me, okay, why do you want to join NEETI? At that time, it was NEETI, obviously. So that was something which I was able to answer because I was prepared with the fact that I want to pursue management, but I do have a little bit of inclination towards operations management. So that was my overall answer to it. That's great. Anything else? No, mostly this was it. Super. Good. So they would ask you questions specifically which you have written in the application form, the answers which you have filled, and they will start picking up questions from your introduction as well. So mostly it will be based on the answers which you are giving in the interview or whatever you have mentioned during application. बहुत ही बढ़िया. अच्छा एक और बात बता तन्मय, what all other calls you had at 98.34 percentile and कौन से इंटरव्यू दे के आया था तू? I had all the new and baby IIMs like CAP, Vizag, Amritsar, Nagpur. I had MDI, I had IIT Bombay, IIT Delhi, and yeah, that was it. क्या कौन से कन्वर्ट थे? Except IIT Delhi, I was able to convert all of them. All of them, no? Good यार, good. चलो बहुत ही बढ़िया. चल अभी आई नो आई एम गोइंग टू ट्रेन देम. अभी बहुत टाइम पड़ा, अभी लोग इनका जैड भी पड़ा हुआ है. बट व्हाट्स योर टेक ऑन, एक ओवरव्यू दे दे, मे बी 3-4 टॉप थिंग विच दे शुड प्रिपेयर राइट नाउ एंड ऑल्सो गिव देम अ लाइन ऑफ साइट ऑफ पीपीओ एज वेल. मैं इनको यही बोलता रहता हूँ कि देव जॉइन द जीडीपीआई प्रोग्राम राइट नाउ, तो पीपीओ को भी लाइन ऑफ साइट भी रखना है कि भाई अपने को विद इन 1 month इनका CV, विद इन 1 month सही कई स्कूल में लेस देन 1 month CV फ्रीज हो जाएगा, प्लेसमेंट कमेटी वाले आ जाएंगे, वो सब हो जाएगा, दे कैन नॉट मेक चेंजेस. And I always tell them current affairs are more or less similar. So, but तू बता यार, how was your journey? You're living that life right now. Right. So usually, if I have to strip it down the whole, that PI preparation, I would, divide it into 3 different points. The first point is the daily reading which you are doing. So, the stuff which you are reading on a daily basis is going to help you a lot. So I would suggest everyone to follow 3 different sources. The first is obviously the economic science, which is a little bit oblique for a start because not everyone will be able to grasp what is, being said in the articles which are written in economic science. But, that is something which they should inculcate as a habit because at the end of the day, they'll have to read it. If not now, they'll have to read it from the month of June itself. Yeah. So it's better to, inculcate, reading ET articles as a habit. So starting off with ET. Second would be you need to start following Live Mint. Live Mint is really good. We used to follow it for our summer placements because it helps you to get a grasp of a lot of topics which might come up in your group discussions. So not just group discussions which are going to happen for your admissions, but also for the summer placements as well. One new thing which I started following from from the month of Jan or Feb during my preparation was Fin Shots. So I really liked what they were doing. Not in shots, so Fin Shots. Oh, Fin FINSHO. Yes. So in shots is also good. If you want to just go through what has happened the whole day, that's also amazing.
Yeah. So the best part about FinShots is that they have two different things which they offer. So if you follow them on LinkedIn or Instagram, they offer infographics. So infographics are basically एक slide में they will put a lot of data, and the data would comprise of a particular sector or a company or a group of company or conglomerate or something like that. So you would get a whole lot of information in just one post. So that is the first part, and you can also subscribe to their free newsletter. So what they offer in their free newsletter is that they would give you an article every day on your email, and those articles are basically based on a current business case which has happened recently, and they would use a very normal layman sort of language that everyone will be able to understand, and they would strip down the whole case to the very cellular level, so that none of the details are missed out in the information which they are providing. So these are the three sources which they should read starting from the day, maybe tomorrow if you want to start it. बिल्कुल सही है. Just to add, The second part would be you should do a lot of mirror interviewing. I'll come That to is that. something which I'll come to that. Just to Yeah. emphasize on the same information. यार ET कौन पढ़ते हैं? Just type in ET कौन पढ़ रहे हैं ET भाई? जल्दी बताओ फटाफट. सब लोग पढ़ रहे हो ना? बहुत बढ़िया. ET सब लोग पढ़ रहे हो. वेरी नाइस गुड. तो अभी ना आपके बिजनेस स्कूल के अंदर जाके सेशन होंगे हाउ टू रीड ET एज वेल. ठीक है. सो द वे यू रीडिंग ET राइट नाउ एंड द वे यू विल बी रीडिंग ET इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट. टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना बंद कर दो. नहीं वैसे काम आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया. आई टॉक अबाउट दैट. तो ET तो भाई आपको पढ़ाएंगे, वो भी आपको लग रहा है कि आपको सब समझ आ रही है, बट अगर लग रहा है तो बहुत बढ़िया. फिन बैकग्राउंड के हो, फिन इंडस्ट्री में काम करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको समझ नहीं आ रही है. पिकअप लाइव मिंट. ओके, बहुत बढ़िया अखबार है ये. तो हार्ड कॉपी लगवा लो यार. ठीक है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हार्ड थिंग्स, Absolutely. बट हार्ड कॉपी जब लग जाएगी ना तो फिर वो अपने बी स्कूल में कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो आते ही घर पे भी आ जाती है. राइट, वो सस्ता मिल जाता है. right. तो बहुत ही प्यारी अखबार है ये. आई एम अ बिग फैन ऑफ मिंट. सच्ची बता रहा हूँ, इट्स सच एन अंडररेटेड न्यूज़पेपर, बट द ओपिनियंस व्हाट मिंट गिव्स दे एक्सप्लेन यू व्हाई दे गिविंग. इनफैक्ट एट अ लेमैन लैंग्वेज FDI की फुल फॉर्म में ब्रैकेट में लिखा होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. FIA क्या ब्रैकेट में लिखा होगा. और वो ऐसा नहीं, वो आज से नहीं, वो मेरे टाइम पे भी लिखा रहा है. तो बहुत ही प्यारी अखबार है, वो पढ़ना शुरू करो. एंड FinShots इज अ न्यू थिंग. जस्ट टू ऐड ऑन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू दोनों बढ़िया अखबारें हैं, बट उनका एडिटोरियल के अलावा बाकी सब धोखाधड़ी है. ठीक है. एडिटोरियल पढ़िए. एडिटोरियल के अंदर वो ओपिनियन आती है. ठीक है. स्पीकिंग ट्री वाला जो पार्ट होता है वो आपको फिलॉसफी बेस्ड थोड़ा ज्ञान दे देता है. एंड ना बीच में आई थिंक संडे को आता है, कब आता है, टॉक्स अबाउट व्यू एंड काउंटर व्यू. That's like really amazing. The best thing about Times of India is that view and counter view. But a pro tip for everyone, don't just diss Times of India because everyone is reading it. वो जो बिजनेस स्कूल्स के अंदर ना ET और TOI का कॉम्बो मिलता है. क्यों भाई तन्मय? हाँ. Yes. हाँ. And business standard also. एंड बिजनेस स्टैंडर्ड तीन का combo. बिल्कुल 3 का कॉम्बो मिलता है, बहुत सस्ते में मिलता है. तो हर प्रोफेसर वो पढ़ के आता है. लिख लो कहीं भी बिजनेस स्टैंडर्ड ET टाइम्स ऑफ इंडिया. कुछ नहीं है तो उसका फ्रंट पेज आर्टिकल और जो मेजर आर्टिकल की न्यूज़ होती है ना बिजनेस स्टैंडर्ड, वो पक्का पढ़ के जाने का. डिपेंडिंग ऑन सम स्कूल देव गॉट टाई विद इंडिया टुडे ऑफ द वर्ल्ड, सम स्कूल देव गॉट, आई कम टू दैट. जस्ट टू ऐड ऑन, वन ऑफ द वीकली मैगजीन तो लगवा ही लो भी बैठ के. ठीक है. एनी वन वीकली मैगजीन. इट कुड बी योर द वीक करके आती है, और कौन सी होती है, बिजनेस टुडे होती है, नहीं जनरल मैगजीन को नाम बताया, आउटलुक होती है, इंडिया टुडे होती है. इनमें से कोई भी उठा लो. और एक और ऐड कर सकते हो आप लोग, एक वन फाइनेंशियल मैगजीन कोई भी. वो फाइनेंशियल मैगजीन कुड बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल मनी, आउटलुक मनी. हाँ, ये भी आप कर सकते हो. और यहाँ फाइनेंशियल है, बिजनेस मैगजीन है, आउटलुक मनी. देन यू कैन ऑल्सो टाइप बिजनेस स्टैंडर्ड. तो जो लोग IIM बॉम्बे में जा रहे हो, तुम्हें प्रो टिप मिल गया बिजनेस स्टैंडर्ड. एंड देन बिजनेस वीक भी पता नहीं आजकल आती है कि नहीं आती, बट ये सब चीज़ें. और FT भी आती है, फाइनेंशियल टाइम्स की भी कोई, क्या होता है उसका नाम, फाइनेंशियल टाइम भी होता है ना, एक वो भी आती है. पिकअप एनीथिंग फॉर श्योर. ये सब हार्ड कॉपी वाली हैं. यू गेस कैन पिकअप फोर्ब्स, यू गेस कैन पिकअप द इकोनॉमिस्ट, यू गेस कैन पिकअप एनीथिंग, बट ये पढ़ना ही पढ़ना है. जो उनका मेन आर्टिकल होता है ना, दोज मेन आर्टिकल्स आर रियली वर्थ इट. यू कैन पिकअप वीडियोज ऑन यूट्यूब. यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, ऑफ कोर्स. आई एम जस्ट सेइंग, ये घर पे बंदा पढ़ के आया था. आई श्योर ऑन गॉड व्हेनेवर आई गो यूज्ड टू टेक इंटरव्यू, तो मैं उस दिन की रोज अखबार पढ़ पाऊँ नहीं पढ़ पाऊँ, उस दिन की अखबार पक्का पढ़ता था. व्हेन आई यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज फॉर वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन द कंट्री. राइट. तो वो पक्का पड़ेगा फ्रंट पेज के अंदर, बिकॉज पीपल कैन आस्क यू व्हाट यू रीड, हैव यू रेड टुडेज न्यूज़पेपर इन मेनी ऑफ द IIM's इंटरव्यूज इन कैप, इन रोहतक एज वेल. ठीक है, डन.